Environmental Law of National University Jabalpur, also known as CREL, and the host of this webinar. This webinar on slaughtering of animal rights and biodiversity in modern democracy is brought to you by CREL in pursuance of our theme of the month, that is curbing animal cruelty. So, by this theme, about this theme, violation of animal rights is nothing Indians do not already know. However, most of the citizens choose to ignore this issue conveniently. As a consequence, India has seen increasing cases of animal cruelty. ये सारे हमारे पास वीडियोस आते हैं, कई सारे वीडियोस भी सर्फेस हुए हैं अबाउट एनिमल क्रूअल्टी, जिसके अंदर बहुत वायलेंस होता है एनिमल्स के साथ. In March 2021, एक CCTV footage आया था जिसमें a man was shown to be molesting a dog in Mumbai. The financial capital of the country reported 8 cases of animal abuse every day. A monkey was hung and beaten to death in Telangana. A street dog was beaten, tied to a scooter, and then thrown off the second floor of a building in Ludhiana. ऐसे बहुत सारे केसेस अभी रिसेंट में एक एलिफेंट के मुंह में फायर क्रैकर फोड़ दिया था एंड which caused that elephant's death. ऐसी बहुत सारे केसेस रिसर्फेस हुआ हैं. कई सारे केसेस आर नॉट इवन रिपोर्टेड जो हमें नहीं पता चल सकती. Considering the basic law, cruelty against animal is a cognizable offence under Section 428 and Section 429 of the Indian Penal Code. Further, there are many laws to prevent such violations. It is us who made all these laws and legislation and gave rights to these animals. But even after all this, how much are we able to protect the rights of animals and safeguard their livelihoods is the question of the hour. It is a delight for me to introduce to you our esteemed guest with us, Mr. Udit Raj Sharma. Udit sir is presently serving as Senior Assistant Professor at UPES Dehradun. He is a specialist in criminal law and has been working in the field since a long time. He has written multiple papers on similar areas. He has done his LLB honors from UPES Dehradun itself and Masters in Criminal and Corporate Law from Indian Institute, New Delhi. It is a pleasure to have you with us, sir. All over to you now. The pleasure is reciprocated, Ankit. I am very, very delighted to be here. Thank you so much. Before we go ahead with the discussion, I was just going through the blog or the call for blog that your center sent, and I was going through the themes, and I must compliment the center that such elaborate themes, such comprehensive themes with regard to animal welfare, animal cruelty. I mean, these are actually topics which are less talked about. These are topics which are less researched. And through this, I'm happy that we have 40 people here. So 40 budding scholars of animal law, I can suppose. If not animal law, then at least environmental law. If not environmental law, then at least law, which will have some concern for animals also. So I'm very happy to be here. I'm very delighted to be here. And I have not just come here to share something with the students of law. I have definitely come here to take back a few points of analysis, a few observations that they might have in their common experience and also in their study of law. So in order to shape this discussion, Arpit, what I've done is I have made a small PPT. I have put some pointers in that, and I have put some important readings there. I have put some important pointers that I would like this forum to discuss and talk about. Okay, so I think I have the rights to share the screen also. So let me do that and then begin my talk. Okay. Meanwhile, I can just confirm once, am I audible to the audience here, the students of law? I'm supposing that you're able to listen to me, and I'm, though I can't see you except a couple of you, I think I'm able to connect to you in whichever way possible. Yes. So I'll just share my screen and then we'll begin this discussion. Okay. So as it is visible to me, I think the screen is visible to you. Can somebody confirm, please? Yes, sir, it's visible.
Okay. So Arpit gave a very humble introduction to my profile, but one thing I would like to add that may be important to the discussion is that you recently, from past 3-4 years, I've been working in the area of animal laws. I'm trying to understand the area of animal laws because there's very less literature, there's very less research, and there's very less scholarship in this area. And among these people who are present here, I am actually very happy that if even some of you contribute to the scholarship of animal laws, it will be definitely a great boon for the cause of animal welfare. Now, I'm also pursuing my PhD in the area of animal law and animal rights. So I would welcome anybody of you who is interested to work in this area, research in this area, or write in this area to connect to me. Arpit, in case somebody happens to inquire, um, you are entitled to share my contact details with the respective students or faculty if they wish to work in this area. Okay, All right. that's not a problem. Thank you, Arpit. Because I'm sharing my screen, I'm not able to see that, but I think it will work out well. So, right, the theme which has been put is slaughtering of animal rights and biodiversity in modern democracy. Now, this is a very sensitive theme. I don't know what it actually means. There's a lot of things that can be talked about here, but I have tried to cull down this theme in the modern context. In terms of in sense of modern democracy, I have understood it the Indian constitutional framework as it stands today, right? With regard to animal rights and biodiversity, uh, we'll talk about few of the themes here. Animal rights, whether the phrase animal rights itself is a correct phrase or whether it's a misnomer. Is there anything called animal rights, or do animals actually have rights? Are big questions for which we don't have very clear answers till now. Honestly, you might wonder, but yes, that's the reality. We've not been able to solve the jurisprudential chaos in advancing rights to animals. A lot of things are going on there. So, whether animal rights are being slaughtered or they have been slaughtered and we are moving towards uh, doing something good to animals, let's see. This analysis I leave to you. Okay. So before I begin any further, my I would like to know from the audience present here that how far do we know with regard to animal rights? How do you want me to engage with you? Do you want me to engage at level one? I mean, in a very common way, or should we start from the very beginning, or should we start directly talking about few jurisprudential challenges or technical issues of law? How do you want me to shape this discussion? Yes, any of you can suggest. Sir, I think we should start from the beginning. Okay, ठीक है. So I believe So yes, yeah. हेलो yes, हेलो Miss Sunita, yes, जी सर ये सेशन आप थोड़ा हिंदी में भी कर सकते हैं क्या बिल्कुल कर सकते हैं सर. मैम, जी जी बिल्कुल कर सकते थैंक यू हैं. सर ओके आई थिंक हिंदी तो सभी को समझ में आती होगी. हिंदी एंड जी और इंग्लिश वी कैन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है तो ज्यादा अच्छा है कि हम हिंदी में चीजों को समझें और समझाएं जी परफेक्ट. थैंक यू सर दोनों इंग्लिश और हिंदी हाँ दोनों का यूज करें. दोनों जी बिल्कुल सर थैंक यू परफेक्ट. ठीक है. So let's start this. Let me then start uh, with a very famous statement by Jeremy Bentham. I hope you are able to see this slide. यस सर अच्छा, ये स्टेटमेंट जब जेरेमी बेंथम साहब ने दिया था, सो इसका कॉन्टेक्स्ट वो है जहां पर कास्टिज्म, रेसिज्म बहुत बड़े लेवल पे था. ब्लैक्स एंड वाइट डिस्प्यूट, women were not given equal rights with regard to men. They were also secondary people, secondary citizens. So
whenever the right based discourse, जब भी हक की बात की गई है समाज में, whenever the right based discourse has happened, it is always that some argument has started which stands as an exclusionary argument to find some jurisprudential fault, that why a person, why a species, why a kind of class is not entitled to rights. Okay, so there was a time when blacks were treated differently. There was a time when a certain kind of caste were treated differently. They were not equal with the other lot, and there was a time when women were not also at the same pedestal with men, as it stand today in many jurisdictions. ओके, सो उस कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं. ओके, आर वी रेडी? एंड दिस स्टेटमेंट इज मेड वे बैक बाय जेरेमी बेंथम. ओके, सो I'm hoping you all are able to read it already, but for your convenience I'll read it also. The day may come when the rest of animal creation may acquire those rights which never could have been withholden from them but by the hand of tyranny. The French have already discovered that the blackness of skin is no reason why a human being should be abandoned without reason to the caprice of the tormentor. It may one day come to be recognized that the number of legs, the velocity of the skin, or the termination of the os sacrum, this with regard to the body structure, the bones, etc., are reasons equally insufficient for abandoning a sensitive being to the same fate. What else is it that should trace the insurpassable line? So, what should be that dividing line that denies somebody of rights? Is the basic question. Is the faculty of reason, or perhaps the faculty of the discourse? But a full grown horse or dog is beyond comparison a more rational as well as more conversable animal than an infant of a day or a week or even a month old. So it is a comparison. If you can see a child who is very small, a child who is a month old, a week old, may not converse, but still possesses certain rights. In fact, multiple rights. Whereas animals, they don't. But suppose they were otherwise, what would it avail? The question is not can they reason, nor can they talk, but can they suffer? So the last line is often quoted in discourses of animal law at several places. The question is not can they reason, nor can they talk, but can they suffer? So animal rights ऐसा कुछ नहीं है कि ये आज पहली बार बात हो रही है 21st सेंचुरी में, या आज ही से एनिमल राइट्स का कॉन्सेप्शन की बात हुई है. These discussions have been there in the jurisprudential discourse from long time, and I don't know what you could analyze from this judgment, this phrase of Jeremy Bentham, but what I could foresee and analyze was, it was pretty shocking to me that at that particular time also very strong arguments were made with regard to animal rights. And Jeremy Bentham is also saying, like a soothsayer, he's saying like somebody who tells future, भविष्यवाणी की तरह, कि एक समय वो भी आएगा जब एनिमल्स के लिए भी राइट्स के वही आर्गुमेंट्स किए जाएंगे जो आज हम ब्लैक्स के लिए करते हैं, फ्रेंच के वुमेन के लिए करते हैं, या फिर ऐसी सिचुएशंस के लिए करते हैं जहां पर एक्सक्लूड किया गया एक कैटेगरी को राइट्स बेस्ड डिस्कोर्स से. राइट? I hope we are able to appreciate what Jeremy Bentham is trying to say here. Right? If that is the case, then we may go ahead and look at the present discourse. Where are we in context of India? Can somebody tell me what is the name of the legislation that deals with cruelty of animals in India? Or are you aware that there is a law to deal with the cruelty of animals in India? Yes? Is there a law? Yes, Hemant?
please. So the Prevention of Cruelty Against Animal Act. I guess And it's of 1960s. 1960. Perfect. Thank you, Hemant. Prevention of Cruelty Against Animals Act 1960, and this was actually uh, a law that repealed the earlier law on animal cruelty, which was of uh, 1898, I guess. So we can see that the legislation, the statute to, to, to prevent animal cruelty were there long back, 1960. In our constitution, fundamental duties have come way back, right? In 1976, and then a specific obligation has been talked about over the citizens with regard to treating animals with compassion, etc. But a legislation to prevent animal cruelty was there much before. Now let me tell you the few pointers that we'll be talking about today, and then maybe take you to the further discussion. Okay, so these are the few discussion points that are being framed. First is animal rights. Is it a misnomer? क्या ये कहना सही भी है कि एनिमल्स के पास राइट्स होते हैं, या इट इज जस्ट अ मिसनॉमर टू यूज एनिमल राइट्स? इज इट बेटर टू से एनिमल लॉ, और इज इट बेटर टू से लॉ ऑन एनिमल वेलफेयर? बिकॉज एनिमल राइट्स जैसा कुछ होता भी है नहीं, पता नहीं. सेकंड, we look at Indian Constitution and animal rights, a few fractions of Part 3, Part 4, and Part 4A, and the Indian Anti-Cruelty Statute, which is basically Prevention of Cruelty to Animals Act 1960, जिसकी अभी बात की हेमंत ने, राइट? मैं आपसे 3 टर्म्स पे बात करने की कोशिश करूंगा. एक है एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, दूसरा है इकोसेंट्रिसिज्म, और तीसरा है स्पीशीज्म. बिकॉज हमारे जितने भी एनिमल वेलफेयर या एनिमल लॉ से रिलेटेड लॉज या पॉलिसीज हैं, उनके बिहाइंड कुछ ना कुछ इन्हीं अप्रोचेस से इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिला है लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स को. यही सोसाइटल शिफ्ट है, यही लॉ का शिफ्ट है. ओके, सो इन 3-4 टर्म्स पे हम जरूर बात करेंगे, बिकॉज दैट विल हेल्प अस in understanding the theme much better. Okay, then we'll talk about parents patria, we'll talk about along with Indian Constitution only, right? And the last part we'll deal later. Okay, so may I start with these pointers? Yes, sir. Okay, fair enough. So animal rights, is it a misnomer? So what I mean to say here is that up till now we've not been able to hold very clearly jurisprudentially that are animals possessors of rights. क्या वो capable हैं rights hold करने के? जैसा कि जर्मी बेंथम ने भी कहा, ऐसे कई सारे arguments आए, और आज से नहीं, कई समय से, right? It has been a very pertinent ongoing debate in jurisprudence that whether animals are subject of rights, whether they are persons in the eyes of law. And up till now, a very clear affirmative decision has not come. There has been diversity of views in this, but a very clear answer has not come. So the recent developments, legal, constitutional, have been towards a rights-based discourse, towards animal rights. So in a way, we can say that yes, animals have been started to be recognized as persons capable of holding rights. But what rights? There are two things. कि कोई हकदार हो, entitled to rights हो, और दूसरा किस चीज के लिए हकदार हो. What should be the content of those rights? What rights should be there for which one is entitled, right? So looking at these two things, we'll have to, if we talk about animal rights seriously, then we'll have to find out first that whether animals actually are subject of rights. If we are able to get an answer in yes, then next question, what rights? Will they be entitled to all the rights,
that we humans are entitled to. But I don't think civil and political rights are going to make any sense to them, right? एनिमल्स को राइट ऑफ वोट देंगे तो उससे कुछ फायदा होगा? Yes, what do you think? You've used the theme modern democracy. तो क्या डेमोक्रेसी के जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें एनिमल्स का कोई कंट्रीब्यूशन होगा? Should they be entitled to vote? What do you think? As students of animal law, you have to think about these things, right? Even if your question does not look very prudent or rational, you can still ask. What do you think? You can use the chat box to respond. क्या एनिमल्स के लिए राइट टू वोट का कोई इंपॉर्टेंस होगा? अगर हम एनिमल्स को कल राइट टू वोट दे दें तो उससे क्या फायदा होगा? Do you think any good thing is going to happen to the animal species? हाँ Hemant, yes, you may respond. Sir, not exactly right to vote, but the representation should be made in regards to the rights or the prevention to the animals. Because what we are seeing right now is not the representation and implementation of such statutes. Statutes are there. So Hemant, representation by humans, right? Or animal rights, that's a different thing. I'm talking about giving rights to animal. अगर आप animals को ही representation का right दे दें, will they be able to exercise it? Will the animal ever go to the court citing Article 21 of the Constitution and argue? I think definitely not. Or will he even present himself as a aggrieved party in the court of law? ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लॉ है, अब देखिए ह्यूमन बींग्स ने बनाया तो एंथ्रोपोसीन तो होगा, इसको हम एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं, राइट? यहां से शुरू करते हैं डिस्कशन. तो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब, या एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच मींस दैट वी ह्यूमंस are the masters of this world, and every other species, everything other than humans are there to serve human beings, right? आपने ये चीज कई बार सुनी होगी, नॉर्मली अपने born and brought up के टाइम कई बार ऐसे एग्जाम्पल साइट किए जाते हैं दैट सबसे इंटेलिजेंट एनिमल ह्यूमन है, राइट? सो we are conditioned in a way that the world revolves around human beings. It is humans who are the masters of this world, who are the masters of this system, ecosystem basically, and every other thing, whether it is animals, whether it is trees, whether it is plants, whether it is rivers, whether it is mountains, everything else is to support us. Everything else is to fulfill our desires, fulfill our needs, fulfill our, aspirations. So अगर ये अप्रोच है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात कहता हूँ, हेमंत, इफ यू लुक एट अ ट्री, two people based on their conditioning can look at tree at a different way, right? One person can look at a tree and see that, okay, this is at least 500 kgs of wood. I can sell it and get, lakhs and lakhs of money, right? The other person can see the tree as a very pious entity in itself, that it is a life. It is a life in itself. How dare I cut the tree? That's not my business. I'm not entitled to do that at all. That's ये मेरी मैं कैसे entitled हो गया पेड़ काटने के लिए? ये पेड़ खुद में एक लाइफ है, और ये पेड़ इस इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल हिस्सा है, जिस तरह से मैं हूँ, राइट? लाइक आई एम सर्वाइविंग, आई एम ब्रीदिंग, आई एम यूजिंग दिस यूनिवर्स, और टू सर्वाइव. वो पेड़ भी यही कर रहा है. So how am I entitled to cut down that tree? So that is what I'm talking about. Our conditioning since the very nature has been Anthropocene. हमें कंडीशन ऐसे किया गया है जैसे हम इस दुनिया में सब चीजों का यूज करने के लिए आए. एनिमल्स उनमें से एक है, राइट? सो अगर हमें फार्मिंग करनी है तो भी हम एनिमल्स का यूज कर सकते हैं. अगर हमें रिसर्च करनी है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है, तो हम पहले एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे. अगर हमें फैशनेबल प्रोडक्ट भी बनाने हैं तो हम एनिमल स्किल का यूज करेंगे, राइट?
अगर इनफैक्ट ये भी छोड़िए, अगर हमें अपने गॉड्स को प्लीज करना है, रिलीजन की ड्यूटी भी निभानी है, तो हम एनिमल्स को सैक्रिफाइस करेंगे, राइट? रेशनली सोच के देखिए कभी, अगर हम उन्हें एक सेपरेट लाइफ मानते तो हम कैसे एंटाइटल्ड हैं कि किसी भी जानवर को सैक्रिफाइस कर दिया जस्ट बिकॉज वी वांट टू प्लीज द गॉड्स, राइट? वेदर इट इज there's a Gadimai festival in Nepal जहाँ पे in one day thousands of cows and buffaloes are cut as a sacrifice to the deity. And there have been several practices like this. Whether it is Bakra Eid, we'll have to ask these questions very seriously. That how are we entitled to do it? Just to celebrate a festival, we can kill lakhs of animals for no reason. So, what is our way of thinking? How are we conditioned to think? I'm just giving you a parallel perspective. I'm not advocating anything here. I'm just trying to connect to you. Okay. So, that's one way of looking at things. So, right. So, इस व्यू को हम एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म कहते हैं, where the human interest is always kept superior to the interest of other things. So, we are the center. एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसकी तरफ वी आर मेकिंग अ ग्रेजुअल शिफ्ट. वी आर मेकिंग अ ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स इकोसेंट्रिसिज्म. नाउ व्हाट इज दिस इकोसेंट्रिसिज्म? Ecocentrism as a philosophy tries to suggest that human race is just like any other race. Like there's a species of humans, similarly there's species of animals. Similarly there's species of plants. So human beings are not the masters, not the saviors, not the heads, not the leaders of this world. They are a participant of this universe like any other organism. It may be animals, it may be trees. So it's a far more inclusive way of looking at the world. It's a far more inclusive way of looking at our existence, that we can't exist alone. Right? That's ecocentrism. We are gradually moving towards this. You can refer to the recent legislative development, recent judicial pronouncements that are moving in this direction. Okay. Now, a third word का use किया है यहाँ पर, which is speciesism. Now, what is this speciesism? Actually, this philosophy that I was talking about, that humans are the steward, or humans are the leaders, humans are the ones who are going to, run the whole world, and other species, other systems are going to support human beings in whichever way possible. So if human beings need entertainment, they can go for a hunt. If human beings need food, they can kill somebody and eat any animal. So if human beings need to dress up nicely, they can kill an organism and dress up nicely. If human beings need better medicine, they can, kill animals, use their skins, use their bones, use their blood, and they can pick up a random animal just to experiment certain medications that human beings are doing. So it's like that. Speciesism is a philosophy that keeps human interest at the topmost priority. And, so how speciest we are as lawyers, how speciest we are as lawmakers, policy makers, judges, these are important questions. हमारे कानून में, हमारे लॉ में, हमारे संविधान में, हमारे बायलॉज में, रूल्स में, या हमारी पॉलिसीज में किस हद तक स्पीशीसिज्म है, we have to introspect on that. So this is the basic discussion that I'm interested in doing with you. Now let me talk to you about Indian Constitution and animal rights. इस point पे I wanted to discuss a very important judgment with you, which is A. Nagaraja judgment of 2014. Have you heard about this judgment? Animal Welfare Board of India versus A. Nagaraja judgment. Any of you who has any idea about this judgment? किसी ने भी पढ़ा है या सुना है इस जजमेंट के बारे में, ए नागराजा जजमेंट के बारे में?
आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं या ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं इफ यू विश टू। यस, none of you? कोई बात नहीं, तो इसे आप एसेंशियल रीडिंग की तरह लिख लीजिए। क्यों? आप सबने जलीकट्टू का नाम सुना है? तमिलनाडु में जो बुलक कार्ट रेस होती है। यस सर। यस सर। किस किसने सुना है? जरा चैट बॉक्स पे बताइए, या इसके बारे में जो भी आपको मालूम है कोई बता सकता है अपने ऑडियो ऑन करके। एनीथिंग दैट यू नो। पिछले कुछ सालों में एक बड़ा लीडिंग डिस्कशन है। यस, कोई कुछ बताएगा जलीकट्टू के बारे में? Sir, I'm not exactly sure, but two or one bull is being run. There is a race between the bulls, I guess. बेसिकली तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये फेस्टिवल मनाया जाता था। तो जलीकट्टू इज अबाउट टेमिंग द बुल्स, राइट? जिस तरह का हाँ आकाश, गो हेड, बताइए। बेसिकली इस पे बुल्स को छोड़ा जाता है क्राउड के बीच में, और क्राउड को कंट्रोल करना होता है बुल को बेसिकली, और जो कर पाता है तो वैसा है। एग्जैक्टली जिस तरह से एग्जैक्टली वो नहीं, बट आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में वो टोमाटीना फेस्टिवल देखा था, जिसके बाद उस तरह के सीन जिसमें एक बुल रेस थी, या कोई स्पेन का एक फेस्टिवल है जहाँ पे आपको दौड़ना होता है और बुल्स भी दौड़ रहे होते हैं, आपको खुद को बचाना होता है। समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली दैट, बट जलीकट्टू इज अबाउट टेमिंग द बुल्स। जो एंशिएंट कल्चर है कि हम बुल्स को टेम करके डोमेस्टिकेट करते हैं, उस कल्चर के एडवांसमेंट में या उस कल्चर को की लेगेसी में ये फेस्टिवल मनाया जाता था। बट इसमें एलिगेशन थी कि बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी और सफरिंग फेस करनी पड़ती है बुल्स को, राइट? सो ये मैटर गया 2014 में सुप्रीम कोर्ट के पास। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया लेके गया इसे, और वहाँ पे जलीकट्टू, क्योंकि नेशनल, इसके साथ स्टेट का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, कल्चर का पार्ट था स्टेट ऑफ तमिलनाडु के, तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक सेगमेंट था जो चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इन फेवर ऑफ जलीकट्टू हो, कि ये प्रैक्टिस ना स्टॉप की जाए, ये प्रैक्टिस रहे। और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वेशंस थे कि नहीं, ये बहुत ही क्रूअल है, इससे बहुत सफरिंग कॉज होती है एनिमल्स को, बुल्स को, और देयरफॉर इट शुड बी डन अवे विद। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट का स्ट्रिक्ट वायलेशन है। खैर, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड अगेंस्ट द फेस्टिवल ऑफ जलीकट्टू। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ईच वन ऑफ यू, आप स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं, आप ये जजमेंट जरूर पढ़िए। रीजन बी, इवन बिफोर डिस्कसिंग विद यू, मैंने एक स्लाइड में सिर्फ एसेंशियल रीडिंग्स लिखी हुई हैं जिसमें ये जजमेंट हाईलाइट किया और कहा है क्लोजली रीड इट। रीजन बी, इसकी कहीं से कमेंट्री पढ़ लेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे इस जजमेंट का एसेंस क्या है। इस जजमेंट में आर्टिकल 21 विच इज अ फंडामेंटल राइट पार्ट 3, उसके अंदर राइट्स ऑफ एनिमल्स को भी रीड किया गया है, विच इज अ अनप्रेसिडेंटेड थिंग। ये बहुत अनकन्वेंशनल है। अभी तक एनिमल्स को फंडामेंटल राइट के लिए एंटाइटल नहीं किया गया था, राइट? बट हेयर एनिमल्स right to life is also read under article 21, which is a very special case, right? So the Supreme Court put a ban on Jallikattu festival. इस जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, किस तरह से पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है, किस तरह से उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस बुल्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, और बुल से किस किस तरह का इल ट्रीटमेंट किया जाता है।
आई एम रिसेंटली गोइंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस जिसमें मैंने एक पेपर लिखा है. मैंने 2 जजमेंट्स को कंपेयर किया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट के. वन ऑफ द जजमेंट इज अ वेरी ओल्ड जजमेंट, 1958 का जजमेंट है, हनीफ कुरैशी, शायद आपने पढ़ा हो, हनीफ कुरैशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और हनीफ कुरैशी का ये जो जजमेंट है ये 1958 का है और काउ स्लॉटर बैन करने वाले लॉज के अगेंस्ट है, यूपी, एमपी एंड बिहार, इन द स्टेट ऑफ बिहार, यूपी एंड मध्य प्रदेश. सो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय टेकअप किया था दैट वेदर जो स्टेट्स ने बैन लगाया है काउ स्लॉटर पे वो रीजनेबल है, फेयर है या नहीं. तो उसमें काफ़ी इंटेंस डिस्कशंस थे उस केस में भी. और अभी का रीसेंट केस जो ए नागराजा का है 2014 का, तो हालांकि इसमें काफ़ी बड़ा गैप है, लगभग 50 साल का. सो आई ट्राइड टू कंपेयर कि सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच टुवर्ड्स एनिमल्स कैसे चेंज हुई है. तो आप जब हनीफ कुरैशी पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि इन हनीफ कुरैशी एनिमल्स आर ट्रीटेड मच वर्स देन कमोडिटी. मतलब भूल जाइए डिग्निटी ऑफ एनिमल्स, रिस्पेक्ट टू द लाइफ ऑफ एनिमल्स, they were treated on pure economic angle. आप उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शायद किसी कमोडिटी की बात हो रही है, किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है, कि एनिमल्स को तब हम स्लॉटर करने के लिए परमिट कर सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं जब वो यूजफुल ना रहे. फॉर एग्जाम्पल अ काउ वाइल इट इज गिविंग मिल्क, नहीं स्लॉटर करना गलत है. बट वाइल द काउ इज no more efficient to give milk or the buffalo is no more efficient to give milk, then we can slaughter them. वो कोई इशू नहीं है, राइट. सो द होल आइडिया वाज रिवॉल्विंग अराउंड यूटिलिटी, व्हाट वी कैन फेच फ्रॉम एनिमल्स. बस हम उनका कैसे यूज कर सकते हैं. एक बार वो हमारे काम के नहीं रहे, यूजलेस हो गए, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर वी कैन किल देम इजीली. दैट वाज द काइंड ऑफ अप्रोच इन हनीफ कुरैशी जिसको हम एंथ्रोपोसीन अप्रोच कहते हैं, प्योरली ह्यूमन इंटरेस्ट बेस्ड, राइट. आर वी गेटिंग इट. तो 2 जजमेंट्स मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ें. इनफैक्ट पर्टिकुलरली एक जजमेंट तो मैं मैंडेटरी रीडिंग कहूंगा आप करें, वो है ए नागराजा जजमेंट ऑफ 2014. आई विल रिपीट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा 2014 सुप्रीम कोर्ट. ओके Arpit, if you need I can give you a copy of judgment also and you can share it with everyone, but I think this would be easily available, right? So It is available. right, please isko Will be shared. insist everybody to read it and I hope आप में से कोई मुझे कमिट कर सकता है कि आप पढ़ेंगे जजमेंट. जी सर, जरूर पढ़ेंगे सर. ठीक है, आई विल बी हैप्पी अगर इस 47 लोग में से 10 भी पढ़ते हैं तो आने वाले समय के लिए थोड़ा सा एनिमल लॉ स्कॉलरशिप में कुछ तो लोग पढ़ेंगे जरूर. तो क्या शेयर कर सकते हैं आपके पास अगर ये है इसका पीडीएफ तो. जी मैम, डेफिनेटली आई विल शेयर इट. मैं आई विल शेयर इट विद अर्पित एंड ही विल गिव इट अक्रॉस. ओके, थैंक यू. सो इस जजमेंट में किस तरह से लॉ और पॉलिसी शिफ्ट हुई है ओवर द इयर्स, तो 3 स्टेजेस हैं. मैं इसकी भी बात करूंगा. आप अगर स्लाइड देखें तो उसमें लिखा हुआ है एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म टू इकोसेंट्रिसिज्म, स्टेजेस इन द ग्रोथ ऑफ लॉ एंड पॉलिसी. तो पहले लॉ एंड पॉलिसी इसलिए आई ताकि हम अनब्रिडल्ड अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन कर सके. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इस टेरिटरी में कोई भी हंटिंग नहीं कर सकता है. वो लॉ इसलिए नहीं लाया गया है क्योंकि एनिमल्स को बचाना है, वो लॉ इसलिए लाया गया है ताकि कोई और एक्सटर्नल इंट्रूडर या कोई और ज्यूरिसडिक्शन का इंसान आके यहाँ पे एनिमल्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके या उनका यूज ना कर सके. वो सोल सॉवरेन राइट होगा. आर यू गेटिंग इट. ब्रिटिशर्स ने कई सारे एरियाज ऐसे डिक्लेयर कर दिए थे जहां पर लोगों की एंट्री बैंड थी या फिर लोग हंटिंग नहीं कर सकते थे. तो वो एनिमल को बचाने के लिए नहीं किया गया था, वो इसलिए किया गया था ताकि वहां पर सोली ब्रिटिशर्स जाके हंटिंग कर सके या सोली ब्रिटिशर्स जाके एक्सप्लॉइट कर सके, राइट. सो फर्स्ट लेवल ऑफ पॉलिसी या लॉ है
प्योरली ह्यूमन सेंट्रिक बेस्ड, जहां पर एनिमल्स ऐसा लगा कि वो एनिमल लॉ की डोमेन में कुछ कानून बनाए, लेकिन वो उसका एनिमल वेलफेयर से कोई खास लेना देना नहीं था. देन केम द सेकेंड स्टेज विच इज इंटरजनरेशनल इक्विटी, मतलब जहां हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की. बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए नहीं क्योंकि एनिमल्स को बचाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेस को छोड़ना है. राइट, how you have heard about sustainable development? It's like developing in a way that we can hand over the world safely in the hands of future generations, right? Something like that. Do we get it? I'm sure you must have come across this idea of sustainable development sometimes in your life. Yes? Now look into the depth of the argument. We are not really concerned with animals. We are not really concerned about the earth. We are concerned that हमारी आने वाली generations कैसे survive करेंगी. So it is again human centric, but partially in the favor of other species, animals, trees, etc. Right? ये जो second वाली approach है, इसमें भी हम seriously animal welfare नहीं करना चाहते हैं, या एनिमल्स की डिग्निटी से हमें कोई खास कंसर्न नहीं है, बट स्टिल because we want to talk about intergenerational equity and handing over the legacy of this earth to further generations, we are still respectful of using the resources, exploiting the resources judicially. And now comes the third stage, which is this ecocentric approach which I'm talking about, which is a very recent development of law, which states that we should not take care of animals or trees just because we should have the sole right to exploit it, or we have to hand it over to other generation, but because they are alive in themselves, they have a dignity in their own existence. हम जानवरों को इसलिए नहीं बचाएं क्योंकि हम हमारी आने वाली जनरेशन उनका यूज कर सके, इसलिए क्योंकि उनको भी जीने का हक है जैसे हमें और आपको है. We should understand limitations. Simple. I hope we are getting this. This is the third approach or third stage of law and policy making. In fact, अगर आप नागराजा जजमेंट पढ़ना चाहेंगे तो उसमें इस अप्रोच के बारे में बात की गई है. These three stages are being talked about. Okay. Now, quickly coming to Indian Constitution, because I've talked about Nagaraja judgment, Article 21 Part 3 में बात की गई right to life की, animals के, और आपकी convenience के लिए I'll just talk to you about right to life in a nutshell. जो argument कोर्ट ने दिया है पैराग्राफ 62 में इस जजमेंट के. The court said every species has a right to life and security subject to the law of the land, which includes depriving of its life out of human necessity. Article 21 of the Constitution, while safeguarding the rights of humans, protects life, and the word life has been given an expanded definition, and any disturbance from the basic environment, which includes all form of life, including animal life, which are necessary to human life, fall within the meaning of Article 21. Right to live in a healthy and clean atmosphere and right to get protection from human beings against inflicting unnecessary pain or suffering is a right guaranteed to animals under Section 3 and 11 of Prevention of Cruelty Against Animals Act, read with Article 51A, capital A, Clause G of the Constitution. Basically, what the court has meant to say is, it has tried to read the right of animals under Article 21, though it has kept again the human interest on the top. Every time it is cautious about human necessity. So, Prevention of Cruelty to Animals Act, जो एक elaborate scheme provide करता है, that what amounts to cruelty against animals, right? So, उसमें एक concept है which we talk about unnecessary pain and suffering. So, अभी तक we are sure that we cannot curtail all the pain and suffering. हम pain और suffering को रोक नहीं सकते, वो तो होगा.
अगर हम एक पेट को भी रखते हैं तो पेट को इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा ताकि कोई डिजीज ना फैले, तो वो भी कुछ पेन तो कॉज करेगा, बट वो एक नेसेसरी पेन और सफरिंग है, एक नेसेसरी पेन है जो हम इन्फ्यूज कर रहे हैं, बेनिफिट ऑफ दैट पेट ओनली, बट unnecessary pain and suffering. The examples that Arpit talked about, केरला का इंसिडेंट जहां एक एलिफेंट के माउथ में क्रैकर्स बर्स्ट कर दिए गए, those kind of incidents which are absolutely brutal and cruel, right? Anyway, constitutional philosophy में हम आर्टिकल 21 को रेफर कर सकते हैं. We can also refer to article 48A capital A, which talks about protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Very important provision, right? Forming part of directive principles, but still a very, very important and judicially enforceable provision. फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A पे आए तो दो क्लॉजेस हैं जो हमें बहुत सिंसियरली रिफर करने होंगे, आर्टिकल 51A क्लॉज G और क्लॉज H. क्लॉज G टॉक्स अबाउट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. Very important phrase, to have compassion for living creatures. It is coming close to ecocentric approach. And clause H, which talks about to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. H में कोर्ट ने नागराजा जजमेंट में ह्यूमैनिज्म वर्ड पे फोकस किया है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग में साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी भी उतना ही पर्टिनेंट है. फॉर एग्जाम्पल, if we want to please God, then why do we need to kill animals? Why do we need to sacrifice animals? If God or Almighty is the father or guardian of this world, this universe, then they are also the father and guardian of those animals also. Yes or no? What do you think? So you are slaughtering one of the child of the same Almighty, assuming in the existence of Almighty, assuming in the that we need to pray and obey and profess different religions. Then slaughtering one child of the Almighty to please the other child, does it need some scientific temper? Does it need some introspection, this practice? Right? So apart from humanism, we definitely need scientific temper and the spirit of inquiry and reform. We need to inquire, we need to self-introspect. Can we do things without injuring animals? Can we do things without hurting them? Can't we resort to such ways of celebrating festivals or professing our religions which do not hurt anybody, which are not cruel and brutal to animals? Why can't it be done? Religions are supposed to change. There was sati system, we changed it, right? वो भी तो custom का part था, but we changed it because it was abhorrent. So why not killing of animals? Why are we still holding to Gadimai? Why are we still holding to Bakra Eid? Why can't we do it the other way? Right? These are important questions जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का पार्ट है, राइट? उसके अलावा जो पॉइंट मैंने इंडियन एंटी क्रूअल्टी स्टैट्यूट की बात की वो है प्रिवेंशन टू क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट 1960, और उसमें भी कई सारे रिसेंट अमेंडमेंट प्रपोज हुए हैं, अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी है. लास्ट मैं पॉइंट पेरेंट्स पेट्रियाज की बात करूंगा, जो एक डॉक्ट्रीन है जिसका भी मेंशन है नागराजा जजमेंट में, इफ यू वांट टू रीड. तो पेरेंट्स पेट्रियाज इज अबाउट state as a guardian. Parents patria is about state as a guardian. For example, India is a welfare state, you know that, right? So welfare state means a state which takes care of its subjects and citizens from cradle to grave, right? So it takes care of its citizens disregardful of the fact that what citizens are doing for the state.
So state becomes like a guardian. एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिया कहती है कि जो लोग खुद अपने राइट्स, अपनी एंटाइटलमेंट्स, अपनी प्रिविलेजेस को नहीं अवेल कर सकते, स्टेट उनकी एक्स्ट्रा केयर करे, उनकी स्पेशल केयर करे. फॉर एग्जाम्पल पीपल विद डिसेबिलिटीज और स्पेशल एबिलिटीज, they are not able to take care of their rights, so state steps as a guardian for them. या कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो डेवलपमेंट प्रोसेस से एकदम आइसोलेटेड हैं. फॉर एग्जाम्पल द होल आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन is nothing but to uplift the weaker sections, to give them more representation. So the doctrine of parent patria suggests that animals who cannot contest for their rights, or animals who cannot contest for their own welfare, the state becomes the guardian. The state should act like a guardian and talk about their interest, talk about their rights, and look for their welfare, because they themselves cannot. It's like a parent. A small child cannot take care of himself or herself. So the parent steps in to take care of the child. Similarly, the idea of a state, and India being a welfare state. Again, Arpit, आपने modern democracy word use किया है title में, so उसके relation में this is very important. I think modern democracy से ज़्यादा important होगा modern welfare state. A welfare state which is more concerned about its subjects, its citizens. So हमारे जो subjects हैं वो सिर्फ human beings ना, right? जो हमारा ये स्लोगन है सबका साथ सबका विकास. So ये सबका साथ जो है, this should not only include humans, this should go beyond humans. This should include species other than humans also. This should include animals. So compassion to animals should become a more onerous duty on the citizens. It should be made enforceable, right? Anyway, the last point, which is use of animals in research, experimentation, agriculture, religion, entertainment, this I've already talked about through examples. However, इसके लिए elaborate scheme कि किस extent तक we can use is provided in the Prevention of Cruelty to Animals Act itself, and a number of judgments आते रहते हैं जो different kind of exploitation या violation of rights या cruelty instances जो कोर्ट तक लेके जाते हैं उस पे आते रहते हैं. So time and again we are shifting limits for those things. Okay, now ये क्वेश्चन है जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहूँगा, that animals exactly हमारे लिए क्या है. Prevention of Cruelty to Animals Act का section 2A define करता है animal as any living creature other than a human being. So भले ही आपकी सब थीम में काफ़ी डिवीजन थे, domesticated animals, wild animals, etc. etc. So here we are not bifurcating them, we are talking about animals as a class itself. What are they exactly now? Are they property? Or right now they are persons capable of holding rights? If they are capable of holding rights, then what kind of rights? Statutory, constitutional, fundamental, what kind of rights? Are they victims of crime? So recently I'm doing a research on this point, that whether in criminology and victimology, animals are also included as stakeholders, or animals are actually looked upon as victims of crime. And whatever literature I've read till now, I found that victimology and criminology are actually guilty of speciesism. So they have also abandoned animals like anything. They have also remained anthropocentric. They have hardly looked about animals as victims of crime, जबकि anti cruelty statutes present हैं different jurisdictions. Anyway, this brings me to the last point of discussion. In fact, this is not discussion. I want you to look at this slide. इसमें मैंने 3 बुक्स के नाम लिखे हैं और 2 जजमेंट्स के नाम लिखे हैं. ए नागराजा जजमेंट जिसके बारे में आपसे बात की, हनीफ कुरैशी जजमेंट जिसके बारे में कम बात की, बट if you want to compare, then you can definitely look into this. Arpit, once my paper gets published, I'll share that with you. Okay, I'm just waiting for it to publish, and once it gets published, I'll share that with you.
तो उसमें दोनों जजमेंट्स का कंपैरिजन आपको मिल जाएगा. यू कैन शेयर इट विद एवरीबडी. ओके. दिस बुक टाइटल्ड एनिमल लिबरेशन, अगर आपके पास वक्त हो तो पीटर सिंगर जूरिस्ट है एनिमल लॉ के, इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है एनिमल लिबरेशन, और एक क्लासिक लिटरेचर माना जाता है इसे एनिमल लॉ पे. आप जरूर पढ़ें किस तरह से स्पीशीजिज्म लॉ एंड पॉलिसी को इम्पैक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, उसके बारे में ये बुक है. प्लीज रीड इट. फोर्थ एक बुक है ईपी इवांस की जिसका नाम है द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड कैपिटल पनिशमेंट ऑफ एनिमल्स, जहाँ पे यूरोपियन सोसाइटी से कई सारे केसेस की लिस्ट बना के ये बताया गया है कि 16-17 सेंचुरीज में एनिमल सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ होते थे, वो कोर्ट में आते थे विटनेस बन के भी, अग्रीव्ड बन के भी और एक्यूज्ड बन के भी, और उनके ऊपर प्रॉपर ट्रायल चलते थे, उनको पनिशमेंट भी दी जाती थी. कैसे होता था इस सब के बारे में ये बहुत फैसिनेटिंग बुक है. दैट एनिमल्स वर एक्चुअली ब्रॉट इन द कोर्ट एज पार्टीज इन क्रिमिनल केसेस. एंड द लास्ट बुक is again a kind of a commentary on animal welfare, which has some critical issues, जो fundamental issues हैं animal welfare के, जहाँ पे law jurisprudential या enforcing differences face करता है, उसके बारे में ये book है. So you can look into this. But basic reading के लिए at least Nagaraja judgment should be highlighted as the most important one. This I am highlighting is the most important one for you all. Apart from that, all are suggestive. Okay? कहीं तो discourse शुरू हो, right? Yes. With this, I thank you all. I rest my words here, and I leave it to you. If you wish to go further in the discussion, I am here to respond to your discussion, and I'll play this slide, leave you with this slide of Jeremy Bentham, and you can keep looking at what he said and how we can shape the law for future. Okay, so with this I rest my words here. Thank you, Arpit. Thank you for this opportunity. Thank you to the society for this discussion. Thank you to all the students and other members who are here. Thank you so much, sir. I ask if anyone has any question or any point of view. Yes, Manjari. Yes, Manjari, please. Sir, as we all know, animals are used for a variety of purposes. Like you just mentioned, some kill them for pleasures, other for fashion stuff like cosmetic and clothing, which I believe do have some alternatives. But, sir, what about the use of medicines, which are the basic necessity of this contemporary times? And do we have certain criteria on which we could like differentiate this exploitation versus that exploitation? So right now, Manjari, the test we have is unnecessary pain and suffering, right? So अभी तो हमारा जितना भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अगर एनिमल ह्यूमन बीइंग्स को भी राइट टू लाइफ है तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, राइट मंजरी? फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी का मर्डर कर दूंगा तो मुझे सजा हो सकती है और डेथ सेंटेंस भी अवॉर्ड हो सकता है, राइट? Yes, sir. सो मेरी राइट टू लाइफ के भी लिमिटेशंस तो हैं ही, अनब्रिडल्ड तो नहीं है. तो अगर लॉ का कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो वो एब्सोल्यूट तो नहीं होगा. So with regard to all these things, we have a test which is unnecessary pain and suffering, और उसके यार्डस्टिक्स नैरो होते जा रहे हैं. मतलब पहले पेन एंड सफरिंग जो नेसेसरी होगा वो उसकी डोमेन ये होगी, धीरे धीरे वो कम होती जाएगी, खत्म कभी नहीं होगी. हाँ, सो I am not making you to pick and choose between this exploitation and that exploitation, but you can definitely look into how much of that. Okay, for example, you talked about medicine. So, our science and technology research is growing by a great deal, right? So we can definitely employ such mechanisms जिससे हम animals का use restrict कर दें,
रेस्ट्रिक्ट ना करें. फॉर एग्जांपल अमेरिका में एक प्रोजेक्ट चलता था विच वाज कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्स, जिसमें चिंपैंजीज का यूज करते थे टू फ्लाई द प्लेन्स और समथिंग, एंड उस प्रोसेस में उनको बहुत पेन एंड सफरिंग होती थी, राइट. सो ऐसे कई सारे प्रैक्टिसेस हैं जिसके बारे में शायद पब्लिक डोमेन में मुझे और आपको ना ही पता हो, हाउ दे आर एक्सप्लॉइटेड, टू व्हाट एक्सटेंट दे आर एक्सप्लॉइटेड. फॉर एग्जांपल फार्म एनिमल्स में जो ये hens होती हैं who are reared for eggs, so they are made to, they're put in cages which are A4 size this long, and they pass entirety of their life in those cages until they go from that cage to a different vehicle where they are taken to a slaughter shop and they're cut. So Manjari, this is problematic. सो मे बी अगर ऑप्शन हो तो हम पोल्ट्री फार्मिंग को अपोज नहीं करेंगे, जहां पर हेन्स और इनको ऑप्शन होगा कि भाई दे कैन रोम अराउंड, दे कैन मूव हेयर एंड देयर, बट केजेस का हम अपोजिशन करेंगे क्योंकि वो अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग है. सो दिस टेस्ट विल कीप ऑन चेंजिंग, बट आई एम नॉट रियली श्योर हाउ वी कैन, वेयर वी कैन ड्रॉ अ लाइन, बट we have to keep introspecting all the time. That is what my opinion here is, Manjari. आपने देखा होगा कोई भी केस आर्टिकल 19 का कोर्ट में आता है तो हमेशा कोर्ट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन और राइट को बैलेंस करने की कोशिश करती है ऑल द टाइम, राइट. कोई एक फिक्स यार्डस्टिक नहीं है, एक अलग केस में एक अलग यार्डस्टिक बनती जाती है, राइट. सो दैट इज हाउ इट इज विद रिगार्ड टू क्रूएल्टी आल्सो एंड पेन एंड सफरिंग, that as per the instance will keep reducing, and to some extent we'll have to, in some cases outrightly we can abandon things. For example, in cases of religion where animal sacrifice is made, or for pleasure and entertainment, hunting, those things, right. So this is my response, Manjari. Thank you so much, sir. There's one more question from Prakriti. Yes, Prakriti, please. Oh, yes, sir. So, while we were discussing Nagaraj judgment, we discussed that animal rights. So, can we say that the effect of this judgment is that it has, in a way, brought animal rights on the same pedestal as human rights? And how far does this judgment has helped us in answering the question that the animal rights are misnomer? Prakriti, I think there was some disturbance. I couldn't get you totally. Could you once repeat Sure, what sir. you asked? Sir, am I audible now? You are audible now. Yes. Okay, sir. Go ahead, So Prakriti. my question is based on the judgment of A. Yes, sir. So my question is based on the A Nagaraja judgment that we discussed. So my question is that, can we say that the effect of this judgment is that it has in a way brought animal rights on the same pedestal as human rights? And how far does this judgment has helped us in answering the question that the animal rights are a misnomer? Okay, very interesting. Have animal rights being brought to the equal pedestal of human rights? Um, mm, that is why I've written closely read this judgment, because कई commentaries ने इस तरह से quote किया, but if you read deeply and word by word, I don't think that is what the court meant. The court have been extremely cautious in making a clear stand. The court said exceptions to human necessity. तो कोर्ट ने राइट्स तो दिए एनिमल्स को, लेकिन बहुत डरते डरते, बहुत कॉशन के साथ कि ह्यूमन इंटरेस्ट कहीं इम्पैक्ट ना हो जाए. सो प्रकृति, इफ यू से दे आर बीइंग इक्वेटेड टू ह्यूमन राइट्स, डेफिनेटली नॉट. आई वुड नॉट से द सेम. They're not equated to human rights at all. Abhi to we have a long way to go there. We are not even close. And not that we are pleading that
we'll have to change the approach of looking at things. जब भी हम right based बात करते हैं, we are always thinking like human versus animals, right? We'll have to have a more cooperative approach here. It's not actually human versus animals. When we look at from this approach, human versus animals, it is going to be an endless discussion. Where are we going to stop? Why can't we change the approach and look at humans and animals? Because we've been using animals from thousands of years. हमारा कोई काम हिस्ट्री में बिना एनिमल्स के नहीं हुआ है, राइट? इफ यू लुक एट हिंदू रिलीजन, हमारे तो पूजा पाठ भी नहीं हो सकते बिना गॉड्स के, राइट? एनिमल्स को हटा देंगे तो गणेश जी की पूजा कहाँ से करेंगे आप, राइट? सो बेसिकली we have to look at this interdependence. We are actually dependent on them. They've been dependent on us. कोई wars नहीं लड़े जा सकते थे बिना horses के, right? ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता हिस्ट्री में बिना हॉर्स के. और ह्यूमंस ओल्डेस्ट फ्रेंड, अ डॉग, जिसने हमेशा से केयर की है, सेफ्टी की, लॉयल्टी इंश्योर की है, जो आज भी ये काम कर रहे हैं, राइट? we would be incomplete without them. So it's Prakriti, it's not actually human rights versus animal rights. I would never want the discourse to go that long, because anyway human rights will supersede. Why can't we have human rights and animal rights, some kind of a cooperative approach? Human rights and animal rights are correlative, and a mutual growth of both these things, something of this sort. Prakriti, I think I've responded to first question of yours. Second was, can you repeat once, Prakriti? So, yes, sir, sure, sir. Thank you for the first response. So, my second question was that can we say that how far this judgment has helped us in answering the question that the animal rights movement? How far this judgment has helped us in answering that animals are what? The question that animal rights are misnomer is a misnomer. Okay, animal rights is a misnomer. Yes, this judgment is very important because this judgment because there are two ways of working about animal welfare. ठीक है, एनिमल वेलफेयर के कुछ एडवोकेट्स कहते हैं कि आप एनिमल राइट्स की बात ही क्यों करते हैं, व्हाई यू टॉक अबाउट एनिमल राइट्स? आप ह्यूमंस की ड्यूटीज की बात कीजिए, एनिमल के राइट्स की बात मत कीजिए. क्योंकि अल्टीमेट क्या चाहते हैं आप कि एनिमल वेलफेयर हो. तो जरूरी नहीं है सिर्फ एनिमल्स को पर्सनहुड देकर या राइट्स देकर आप एनिमल्स का वेलफेयर करेंगे. आप ह्यूमंस पे ड्यूटी डाल दीजिए, एंटी क्रूअल्टी लॉस को और स्ट्रिंजेंट बना दीजिए, राइट? जिस तरह से आप मॉन्यूमेंट्स का ध्यान रखते हैं, फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, या गॉड्स हैं या डीटीज हैं, तो उनको कोई डिस्ट्रॉय ना करे, ऑब्स्ट्रक्ट ना करे. इस पे आप स्ट्रिंजेंट लॉज हैं. पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई डिस्ट्रॉय ना करे, राइट? तो आप राइट बेस्ड अप्रोच को छोड़िए, ड्यूटी बेस्ड अप्रोच पे आ जाइए. तो ये दो जूरिस्प्रूडेंशियल स्टैंड पॉइंट्स हैं प्रकृति. आई होप यू आर एबल टू गेट मी. ठीक है, तो हम क्यों राइट्स की बात करें, एक अप्रोच है ऐसी. सो but I don't think Prakriti answer lies somewhere here or there. We have to move with both the approaches. We have to explore possibilities of holding animals as persons holding rights, but what rights ये बहुत sensitively determine होंगे. जैसा कि मैंने कहा, एनिमल्स को आप राइट टू वोट देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं. एनिमल्स को आप राइट टू लाइफ, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर इतना भी इंश्योर कर सकते हैं, वी आर गुड, राइट? इसी तरह ड्यूटीज, डेफिनेटली ड्यूटी बेस्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एनिमल्स जिनके राइट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि हम उनके राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, और उन्हें शायद ये पता भी नहीं है कि उनके पास XYZ राइट्स हैं, क्योंकि हमारी लॉ की लैंग्वेज भी तो हमारी है ना, एंथ्रोपोसीन है. या एनिमल्स को कैसे कन्वर्स करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में आप? They'll not be bothered about Article 21, right? The only thing that we should look up to is कि हम एक eco-centric model develop कर सकें,
राइट? उस इकोसेंट्रिक मॉडल में थोड़ा सा राइट बेस्ड अप्रोच भी चलें, लार्जली ड्यूटी बेस्ड अप्रोच भी चलें, जैसे भी चलें, बट समहाउ वी गेट देयर. So Prakriti, animal rights, whether this is a misnomer or not, I think it is not totally a misnomer, at least after this judgment. But बिना एक लेजिस्लेचर के इंटरवेंशन के, मतलब जब तक पार्लियामेंट कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं बनाती है इस पे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं आता है जहां एनिमल्स को भी कुछ राइट्स के लिए एंटाइटल किया जाए, तब तक we can say that this debate is going to go on. So animal rights versus animal welfare, which is a leading debate, this will keep the question open that whether animal rights is a misnomer. So Thank you, yes, sir. but Nagaraja judgment, Prakriti, is a special judgment. This is still, जब आपके पास कुछ नहीं हो तब नागराजा ऐसा जजमेंट होना मतलब बहुत बड़ी बात है. It is actually a boon. We can use Nagaraja to do lot of good things for animals. We can do it. We can use Nagaraja to change the whole approach, and we can do a lot of beneficial things for animals. Yes. All right, sir. I Thank you, guess sir. we are done with the question round, and I request Shadi to do so. Good evening, everyone. Am I audible? Yes, Arshali, what's your question? Sir, it's not my Shadi question. will be giving the answer. Okay, so are we coming to the end of this? Yes, sir. Yes. Okay, so my request to all of you is एक छोटी सी बात, that I was very happy at least to meet you all. Reason being, एनिमल लॉ पे जो छोटी मोटी लिटरेचर है, कम सी स्कॉलरशिप है, आई थिंक आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो एनिमल लॉ पे स्कॉलरशिप बढ़ेगी. जब इस पे रिसर्च की जाएगी, पढ़ा जाएगा, तो डेफिनेटली कुछ अमेंडमेंट भी आएंगे, राइट? एंड ओवरऑल थिंग्स वुड चेंज. सो इसको इंटर जनरेशन इक्विटी समझ के एडवाइस ले लीजिए, दैट keep reading about animal law related things, and it's an ocean of open discussion. It's a Pandora box of discussion. So ऐसा मत सोचिए that don't be judgmental before entering into this research, right? That this is some secondary thing. हम आर्बिट्रेशन पढ़ रहे हैं तो वो बहुत लॉजिकल है, और हम एनिमल लॉ पढ़ रहे हैं तो वो तो बड़ा मॉरल साइंस टाइप कुछ है. ऐसा प्लीज मत रखिए. Animal law is very much part of the law. It's very much recognized by constitution, by the statutes in India. So let's stop treating animals secondary, right? Secondary is subjects of law. जैसे मैं एनिमल लॉ पे जब पढ़ने लिखने की बात करता हूँ या पेपर की बात कर रहा हूँ, सबको लगता है मैं कोई मॉरल साइंस की बात कर रहा हूँ या कुछ इस तरह की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई बैनर लेके खड़ा हो जाऊंगा अभी, दैट डोंट डू क्रूएल्टी टू एनिमल्स, बिकम वीगन, right? So I'm not interested in taking those standpoints. The idea is, let's academically look at this subject. ये क्या है, एनिमल्स को लेके क्या डिस्कशंस हैं लॉ में, राइट? एंड एनीवे, मेरी तरफ से आप सबको इनविटेशन है, जब भी कोई डिस्कोर्स और डिस्कशन हो, इन केस यू वांट मी, आई एम देयर. In case you want to discuss something with me, I'm there. And in case you want to write something, then also I'm there. So we'll carry on this discussion, right? All the best from my side. Harshali, you can do the formal vote of thanks. Otherwise, I think I take it as my duty to thank you all for being here. I'm more happier than you to find you here. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, I, on behalf of the CREL team, and I Harshali Bargale, co-convener of the Center for Research in Environmental Law, I thank you on behalf of the CREL team that you came and gave your busy schedule time. And sir, a million sincere thanks to you for the sea of wisdom and knowledgeable lecture you shared us with during your amazing, wonderful and knowledgeable lecture. Sir, we are very thankful that you were present in our webinar. और यहाँ पर उपस्थित सभी जिन्होंने ये वेबिनार सुना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद. और sir, we would be happy that you will come forward and interact with us more.
And so lastly, I would like to inform you that we are writing blog every month. So we would be happy that you contribute to our blog writing also. Thank you so much and मैं have a nice कुछ ब्लॉग कंट्रीब्यूट करूंगा आपके उसके लिए, ठीक है? आई विल शेयर समथिंग विद यू, नॉट Sure. वेरी लीगल, नॉट वेरी टेक्निकल, ऐसा जिससे सब लोग कनेक्ट कर सकें, कुछ इस कॉमन लैंग्वेज का। आई विल राइट समथिंग। एंड सुनीता जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप थैंक यू सर। अगर आप कनेक्ट करना चाहेंगी तो आप कर सकती हैं, और धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड अर्पित, अगर इसकी कोई रिपोर्ट बनाओ इवेंट की तो प्लीज मुझसे भी शेयर करना। एंड Yes, sir. इसकी report राइट, भी बनेगी and we'll be sharing all the reading material and notes about this lecture to all the students and I'll share it. ग्रेट, आई विल बी हैप्पी। ओके, थैंक यू। थैंक यू इफ सर। आपका नंबर मिल सकता है क्या सर? हाँ, अर्पित के पास है, आप उनसे ले सकते हैं, ही विल शेयर विद यू। जी, एंड थैंक यू ठीक सो है, मच। अब आप सबकी इजाजत हो तो आई कैन लीव। जी, बहुत बहुत Thank you, sir. धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। Thank you. Sir.